तो आज हम बात करने वाले हैं H6 एरर के बारे में, जो कि हमारा इंडोर मोटर का होता है। कई बार शॉर्ट सर्किट से या फिर चूहे या गिलहरी वायर काट जाते हैं, उसकी वजह से ये एरर आता है, जो कि नॉर्मली है। लेकिन अगर वो चीज़ें ना हो, जैसे कि वायर नहीं कटा या शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ है, उसके बाद भी अगर आपके ऐसी में एरर आता है, तो उसके लिए आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को फॉलो करना होगा और उस तरीके से उसको चेक कराना होगा। तो देखिए, और इसके बारे में अगर आपको डिटेल्ड में वीडियो चाहिए तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके आप पूरा वीडियो को देखें। Let's go. Why should we suffer?